राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। आज हम साथी स्पीक्स पे बात करने वाले हैं दी अनमास्किंग कलेक्टिव से सानिया बग्गा, शगुन अग्रवाल एंड संजना सरीन से। मेरी मुलाकात इन तीनों से बहुत ही वियर्ड और कोइंसिडेंटल और सेरेंडिपिटस वे में हुई थी। एंड उस मीटिंग में मैंने जो एक चीज़ फील की वो थी सेफ्टी, बहुत बहुत सेफ्टी फर्स्ट मीटिंग में। और उस सेफ्टी की वजह से मुझे बहुत सपोर्टेड फील हुआ ये वेंचर साथी और साथी स्पीक्स स्टार्ट करने के लिए। तो आज इसी विषय पे सपोर्ट थ्रू सेफ्टी या सेफ्टी थ्रू सपोर्ट पे मैं दी अनमास्किंग कलेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ और ये भी जानना चाहती हूँ कि दी अनमास्किंग कलेक्टिव हमें सेफ और सपोर्ट फील कराने के लिए क्या क्या करता है। वेलकम संजना, वेलकम शगुन एंड वेलकम सान्या। मैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक 2 महीने पहले मैंने सोचा था कि आप लोग को इंटरव्यू करूंगी एंड ऑल थ्री ऑफ यू आर हियर टुडे एंड वी आर डूइंग दिस फाइनली, सो ये Let's go. so I want to start with not a weird meeting and coincidental and serendipitous meeting, but asking you about the Unmasking Collective. मैंने बहुत ही सपोर्टेड और सेफ फील किया था हमारी फर्स्ट मीटिंग में एंड एक सपोर्ट ग्रुप सेशन मैंने दी अनमास्किंग कलेक्टिव के साथ अटेंड किया था एंड बोथ द टाइम्स सेम फीलिंग्स, सेफ्टी एंड सपोर्ट। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग को कैसे सपोर्ट और सेफ्टी मिला कि आपने दी अनमास्किंग कलेक्टिव स्टार्ट किया, उसकी स्टोरी क्या है? I think I've been thinking about this idea of unmasking since the past 2 years. But I was just बस वो दिमाग में था, सोचे जा रही थी. I would talk to some people about it. That, I want to share stories, I want to cover stories, I want to work for community mental health. So I am a psychologist and I am somebody who's been in active therapy for many years, on and off, on and off. And I've also had some lived experience with mental health struggles. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत थेरेपी ले ली, बहुत कुछ कर लिया, and that's very helpful. But what more? What more do I need for myself? And I felt the need for connection, I felt the need for support, I felt the need to be heard. And it sounds very dramatic, but I think मुझे वो मिल नहीं पाई active space. So I wanted to build that space. And then I reached out to Shagun and Sanjana and I realized that अकेले क्यों करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अकेले थोड़ा ना करूँगी. सो आई रीच्ड आउट टू देम एंड ever since मतलब वो सीड था दिमाग में and to see it happen just it's been just 5 months but हाँ, no, I don't think it's anything short of magic because actually having those ideas materialize, having people believe in that vision, share the same brains, like wow, like that feeling is amazing. And unmasking came from this whole idea of how every time I felt the need to mask my emotions, mask my OCD, for example, or mask a lot of things in my life. And I wanted to, I want with people, with Shagun and Sanjana, to create a space where we can, and with you as well, like with everyone I meet, to kind of create spaces of unmasking. Safety support कहाँ से आया पता नहीं, but yeah, that's a little bit of an idea of where, like, I feel it's very important for us to work on community spaces, and I feel like we all heal in community, in connection, and not just in an isolated space. I'll go next. Yes. So, like Sanya said, she reached out to us. So, I think last year only Sanya and I were meeting after a very long time post COVID. And I think the safety and support didn't come from actively making a professional space like that, but it was already something we shared with each other. So all three of us went to the same college and studied psychology honors. And Sanjana was 1 year junior, but Sanjana has automatic, matlab, it's just been a very natural wavelength synchronization, And Sanya was like, yeah, okay, we're meeting, we want to do this. And then we were like, okay, fine, this wasn't a friend catch up, this was actually a business meeting. And it also took a while to come into like fruition, but it kind of naturally just fell into place. And this is something we've all, I think, somewhere
to be a part of, but we didn't find that space. So Sanya was the initiator, of course, but कर लिया नहीं मिली तो बना ली like I think हमने हमारे पॉडकास्ट में भी प्लग इन फॉर शेर दिली हम लोग ने भी सोचा था कि if there isn't a space at the table then we create a new table तो हाँ and it's been Wow. happening since then काफी स्टेटमेंट्स है मेरे पॉडकास्ट के क्रिएटिव है ना? बना लूंगी मैं ये yeah What about you, Sanjana? Sanju? So like very similar things. I was their junior in college, and I remember one time Shagun just like losing her mind with all the work, and I was feeding her honey chili potato अपने हाथ से कि नहीं हो जाएगा. And I feel like that's just been like the sort of vibe and theme which has come into the work we're doing as well. We wanted to create a space for safety, support, comfort, where you can just be you and figure out who you are for others, and in that process UC is also acting like that for all three of us also in some way or the other. So I know that I don't need to like pretend to be someone, this professional self when I'm on a UC call or when I'm working with UC. So I feel like the support and safety sort of course we're actively building it in many ways, but it was also just very natural. हम लोग ने से लॉन्ग फॉर्मेट में स्टोरी सुना दी अनमास्किंग का एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग हाउ ऑल थ्री ऑफ यू मेंशन वन थिंग कि फ्लो में हो गया एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सीड की जरूरत होती है एंड देन हमें पता नहीं होता राइट कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीड को एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इट नीड्स डिफरेंट थिंग्स सो वो फ्लो में ही पता चल सकता है लाइक पहले कोई अनमास्किंग कलेक्टिव नहीं बना है तो डोंट नो कि कब पानी देना है कब खाद डालनी है वो फ्लो में ही पता चलता है तो आई थिंक दैट स्टेट ऑफ फ्लो इज वेरी कॉमन फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स इफ यू टॉक अबाउट इट मैं खुद वो ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो शॉर्ट फॉर्मेट में एक फन क्वेश्चन कि अगर तुम तीनों को द अनमास्किंग कलेक्टिव को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो क्या वर्ड यूज करोगे आई थिंक फॉर मी अभी बोला एकदम दिमाग में आया आई थिंक सहारा नॉट लाइक हिंदी सपोर्ट का बट मेरा सहारा लाइक फॉर मी इट इज yeah it's like my sahara I don't know it's my support so yeah and I'm very protective of it so yeah I think it's my support I don't know sounded very good in my head इट डज इट इज सहारा ना अब तुमने बोल दिया मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा उसका इंग्लिश वर्जन आ रहा था मेरे दिमाग में बट फॉर मी आई थिंक इट्स ऑल्सो it is the essence of hope for me right now because we're currently in a world where at least I'm in a situation where choosing things that you care about and don't tangibly like print gaddies of notes for you is a very conscious decision and it's hope and it's faith कि there is you can take up space for things you care about also and the ultimate outcome doesn't necessarily have to be something that society cherishes and values immediately majority of it Very cute. I would say something like hopeful chaos. No explanation after that. होपफुल chaos hopeful chaos Interesting. love that वेरी इंटरेस्टिंग interesting तो अभी रिसेंटली होपफुल केओस से मेरे दिमाग में आया कि रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी ऑफ दिस गाय हिज नेम इज बशार एंड ही डज सम एलियन क्रीचर का चैनलिंग ओके सो he told 3 mantras for freedom so what why not and interesting so like I feel that these 3 are so cool because इन तीनों से
जो एक चीज मुझे फील हुई है वो है सेफ्टी फ्रॉम अ स्पेस ऑफ कंफ्यूजन. देर आर मेनी डेज जब मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इन माई हेड, एंड देयर इज लाइक अ वियर्ड एज क्वेश्चन इन माई हेड, और मैं अपने आप को उसके बाद बोलती हूँ सो व्हाट, नहीं पता मुझे इसका आंसर, सो व्हाट, एंड दैट I जस्ट like that. drifts me into this space of safety and fun and freedom. तो मतलब पता नहीं, बहुत ही cool है कि मेरे दिमाग में ये चीज आई. मेरे को तो लगता है इंटरेस्टिंग इज सानिया's life motto. Interesting. है Not ना? interesting, but like, बस तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आप लोगों से ये भी है कि अनमास्किंग कलेक्टिव के जो क्रिएटिव है उसमें 3 चीजें लिखी हैं. एक है साइकोथेरेपी, एक है सपोर्ट ग्रुप, एंड एक है स्टोरी टेलिंग. सो साइकोथेरेपी असाइड, विच इज आई थिंक लोगों को यूजुअली पता होता है कि क्या होता है जनरल बेसिस पे काउंसलिंग. सपोर्ट ग्रुप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट ग्रुप्स कैसे कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, एंड व्हाई इज इट सो पावरफुल वो सेफ्टी क्रिएट करने के लिए? I feel like, you know, this ये हम ऐसे बोलते हैं कि अकेले आए थे अकेले जाना है. Yeah, even, you know, lot of things that you read about liberation, detachment, and all of these things sometimes point towards अकेले हो, कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, and you know, like all of those things. But very recently, while I completely understand that your relationship with yourself is the most important relationship and all about self love, but I also feel like allowing connections, allowing or creating spaces of support or togetherness. I think we're all relational beings. We all need people. We all need connections. We thrive in love. And love, there's so much love. There might be so much love in us, but to be able to offer love, receive love, to be able to connect with people, to be able to live that relational aspect of us, I find that particularly very healing. Whether it's psychotherapy work or whether it's support groups, I feel like the part where people are coming together and they might have सबकी अपनी journeys है, सबके अपने issues हैं, सबके अपने joys हैं, but they're coming together for each other irrespective of anything. I think it's very powerful. I feel like the strength you can get in community and connection is I find it to be very powerful. Yeah. तो मतलब जैसे I मुझे आप मतलब what you said, with what you said, मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि हमारी जो सेंस ऑफ सेफ्टी है, जैसे आपने लव वाला एस्पेक्ट बोला, आई फील लाइक लव का ऑपोजिट इज फियर, एंड फियर इज व्हाट मेक्स अस फील अनसेफ. डर की वजह से हमें अनसेफ लगता है, मतलब मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे. तो शगुन, मे बी यू कैन टेल अस कि मतलब when we think of fear, unsafety, तो वहां पे वो लव एंटीडोट की तरह सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू कैसे हमें हेल्प करता है? I personally think, like having been a part of support circles for a bit now, as an attendee, I think there's a lot of relatability and validation that comes with these groups, because what you're feeling when you're feeling it alone, that is where the fear comes, where you're like, this is so unfamiliar and uncomfortable that I don't know if I'm capable of navigating through this on my own. And suddenly you're in a group of people and everyone has had somewhat of a similar experience. You're like, oh my God, like Sanya said, that we are all relational beings. It suddenly feels like कि तुम्हारे एक्सपीरियंस को वैलिडेशन मिल गया है और लोगों से, एंड सडनली व्हेन यू हैव दैट वैलिडेशन, you're able to take one step back and observe your fear. Your fear is not going anywhere, but your observance of the fear itself makes it, and aided by love and support from these many people, it makes that feeling of fear less overwhelming. I personally feel that. And then when it's less overwhelming and you can observe it,
you can navigate through it. That fear is probably still going to be there. Of course, that support circle उस डर को नहीं हटा सकता, पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव को शायद उस पे बदल सकता है, और 10 लोगों के एक्सपीरियंस से तुम्हारे फियर को वैलिडेट करता है. तो मैं भी जब आप तीनों से मिली थी हमारे मीटिंग में, that is exactly what happened. I was so afraid because that was my first time going to Khan Market and doing tarot readings. मुझे नहीं पता था लोग कैसे लेंगे उसे, कैसे perceive करेंगे that I'm, doing street readings and I'm like stopping people and say, hey, do you want to get a reading on body, mind, emotions? तो मतलब मुझे भी ऐसा ही था कि कैसे react करेंगे, and I was afraid. But then when you guys brought your happy smiles, it made me feel validated कि हाँ मैं कुछ ऐसे गलत नहीं कर रही हूँ, या मैं कुछ ऐसे बहुत ही crazy नहीं कर रही हूँ. People are interested in trying it out. कुछ नहीं तो मेरा जो thought है वो एकदम ही outworldly और alien नहीं है. It is something that can help people or people might like. And look, we met. So that validation, that support, that safety, I think works wonders. Sanjana, like Shagun mentioned something about loneliness. So my question to you would be ki, say for example, the third aspect of what you guys do is storytelling. And जितना मैं समझ सकती हूँ storytelling के concept को, कि हम सबकी कोई ना कोई story होती है और हमें शेयर करनी होती है. मेरे दिमाग में तमाशा मूवी आ रही है स्टोरी टेलिंग से. सो हमारी सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है, एंड अज्यूमिंग दैट्स एग्जैक्टली हाउ द स्टोरी टेलिंग ऑल्सो वर्क्स फॉर द अनमास्किंग. सो हाउ डू यू थिंक दैट स्टोरी टेलिंग हेल्प्स अस विद द आइडिया ऑफ लोनलीनेस? अकेलेपन को कैसे दूर करती है स्टोरी टेलिंग? So that is the exact idea behind storytelling. Ki there are so many stories inside all of us, but oftentimes we think that it's not important, it's not worth telling, or it doesn't matter. So to sort of tackle that in a very gentle way is what Sanya came up with for storytelling. So we've told like 5, 6, 7 stories till now. They've all been around topics that are inherently lonely, like grief, loss, death, or just, therapy, mental health. These are things that we tend to experience in isolation and then keep isolated, because these are not things that we talk about a lot. So that's what we're trying to do. Like recently we did a story on grief, and all of us realized that we put up this very strong facade कि हाँ सब ठीक है, सब हो जाएगा. But on the inside, all of us want the same thing. All of us want to cry with each other, talk about that grief, talk about how we feel broken or how we feel lonely. And doing that in itself is a way of creating community and feeling less lonely. So the idea is that even if one person reads somebody's story and it clicks for them कि oh, और लोगों को भी ऐसा लगता है, I'm not the only one, that is mission successful. Because knowing that other people, even random strangers, feel similar things, are thinking similar things, can be very comforting. And especially if you don't have words to explain it yourself and you read these words from somebody else, it can be like a very warm hug when you're feeling very cold. And you're feeling very cold today. Always. But yeah, it can be very comforting to know that there are people who are feeling the exact same things that I'm feeling. And also, as a storyteller, as someone who tells their story, I feel like it's very, and I don't want to use this word, but it is genuinely a really empowering feeling that I am taking up so much space. This experience of mine is taking tangible form, and I don't have to feel weird about it. People care. Even if people don't care, I have put it out there. As someone who's been writing the stories, been interviewing people actively, I've also realized that these stories are probably the first times people ever think about their experiences so deeply. They give words to their experiences. And the fact that I can listen to them and then help them tell that story by writing it is a very weird, but also it's like an honor.
कि आप पहली बार ये इतना डीपली सोच रहे हो, आप मुझे बता रहे हो मैं कौन हूँ. But they chose to take this step. So it's very similar to what Shagun said. Ki even if nobody else cares, the fact that in this Google Meet we're taking up this space for an hour is the point. Like, people have actually come to us and told us that, is my story worth, like, kiske bare mein bolu, how is it supposed to be? So people feel like their own stories are unimportant to them, their own lives, their own emotions cannot take up space. Like Shagun, like I would keep telling Shagun, take up space. Like this quote that flows, that mountains don't apologize for the space that they take, and so you shouldn't as well. So I feel like that is very very empowering. And yeah, I think Sanjana is very right. I think it is such an honor, such an honor. ऐसे random लोगों को, they are meeting us, two random people they are meeting, little girls. Like I think I'm a little girl. I think Sanjana is a little girl, and they're meeting us, and then they're sharing their stories. Crazy. But even it's so rewarding, even if we don't yet know what to do with it. The act in itself is very, very rewarding. I shared my story as well. Sanjana does her magic with the stories. तो अपने में ही, मतलब हम अपने में ही बहुत खुश हैं अभी, बट we'll figure out ways. तो मतलब मैं दो चीजें नहीं, एक्चुअली एक चीज रियलाइज की और दूसरा मेरा क्वेश्चन है. तो पहली चीज जो मैंने रियलाइज की इज दैट हमने जितने भी अभी आप लोगों ने कीवर्ड्स दिए, जैसे लव, लोनलीनेस, say for example fear, all of these are like masks only. All of these emotions are like masks, and when you find people with similar masks, similar things, then is when you actually feel like, yeah, okay, is mask ki zarurat nahi hai, let me take it off. So I think the masks are also very important, because usi se relatability banegi, and then deciding what mask do you want to carry, कौन सा तुम्हें पहन के चलना है, कौन सा नहीं पहन के चलना है, किसके साथ कनेक्ट करने के लिए, वो भी आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. एंड स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट में वो मास ही हम शेयर कर रहे हैं ना लोगों के साथ, और उसका ही फॉर्म हम देख पा रहे हैं. तो लोग यूजुअली बहुत अशेम्ड होते हैं, बहुत मतलब उनके अंदर बहुत शेम होता है कि हमारे मास को कौन पहचानेगा, मुझे कौन पहचानेगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूँ. अगेन गोइंग बैक टू तमाशा. बट देन जब हमें दिखता है कि वो उसने भी सेम ही मास्क पहना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी की है, तो आई एम लाइक, ओ ये मास्क हमारे सिमिलर है, ओके वी वाइब, ओके दिस इज सो कूल. तो दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड कि फ्रॉम योर आंसर्स. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था आप लोगों को, बिकॉज आई वॉन्टेड you to tell your story apart from you being a psychologist. और उसके अलावा आप तीनों कौन हो in general as human beings also. What is your personality like of the founders of the Unmasking Collective? What do they do to make people safe? So my next question is, in one word, how would you describe yourself apart from your profession? आप जो करते हो उसके अलावा आप कौन हो, एक वर्ड में. I can go first if you want, Sanya. हाँ, I have two words. Two words चलेगा क्या? चलेगा ठीक है, दौड़ेगा. ठीक है. I think two words that describe me are curious and goofy. Curious and goofy. I think Curious Sanya's and feeling goofy. worse now. ये like, more Sam to pressure. Sam. Yeah? No, Red hair I gang. I'm not feeling pressure. I have a thing to say, but मुझे लगता है मेरे को ऐसी बातें क्यों आती है मेरे दिमाग में, मतलब मेरा ये चल बोलो रहा है. ना. I think क्या? one way to describe me, it's, I don't know, it's I think a little arrogant, but I feel like love. Like I don't know. And now like it's again dramatic, but I feel like I feel so much love for people around me all the time, which I've been noticing in the past couple of years, which was not the case some time ago. But there's so much love in me. Sometimes I have to like think of toning it down. कि भाई क्या people weird out हो जाएंगे.
So I think of myself as, and love is also a lot of grief. It's also a lot of sadness. It's also a lot of emotions. It's a lot, basically. There's fear, there's uncertainty. So yeah, I think if I were to describe myself, I think I am love. Sounds cringe, but yeah. Because I feel like there's so much in me that I want to give to the world. More importantly, give to myself. और मैं उसको कंटेन करने में रह जाती हूँ कि इसको कैसे मैं चैनलाइज करूँ, कैसे कंटेन करूँ, अपने अपने इमोशंस को कैसे करूँ. बट या, संजना. I had very similar answer to that. It was like loving and open. शाहरुख खान याद आ गया मुझे ओपन When I saw you ना वहाँ पे, I don't know, I felt that love on. That was just out of love कि कुछ तो try कर रही है बंदी यार, सुन लेते हैं. You know, like it came from that. Everybody just needs that love. दिनीमा, तुम भी बताओ So, तुम्हारा it's fun वन to- वर्ड क्या है? Yes. मेरा सेम है. सो मेरी जो बायो है इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट की इज हु एम आई. And my answer to that, I don't know if I've written it down, but my answer to that always has been on that same account without the question first, love personified. So for me, it's very clear from day one that कि एक ही चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है. अगर हम सब कुछ मिटा दें और हटा दें, और ये मैंने अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी फील किया है कि इफ ये सब कुछ बस एक स्टोरी है और मैं एक इल्यूजन हुआ, हम सब एक मैट्रिक्स में है, उसके अलावा बचेगा क्या? तो मुझे रियलाइज हुआ कि बस प्यार है, कि और ऐसा प्यार है जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा. वो ऐसा प्यार है कि आप 5 घंटे रो सकते हो. मैं 5 घंटे रो चुकी हूँ. एक दिन रात को जब मुझे वो महसूस हुआ कि क्या मैं अपने कंप्लेन्स में फंसी हुई हूँ, पेरेंट्स प्यार नहीं करते या दोस्त प्यार नहीं करते या रोमांटिक रिलेशनशिप में खुद से प्यार नहीं करती. एक्चुअली जब वो प्यार महसूस होता है कि जब कुछ नहीं है तो भी बस प्यार है, वो अनकंडीशनल लव can actually make you cry for 5 straight hours. So I think yeah, the strength. that's my answer. Yeah, I think the strength that it brings, like while you were talking, all I could imagine is there is so much strength. It's such a force. Like it's such a force. But पता नहीं, फिर लगता है कि पता नहीं, life, systems, politics, world, environment, I don't know. But internally, I do resonate with that a lot. मैंने अपना आंसर दिया तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, एक मेरा एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा बाहर की एनवायरनमेंट पे एंकर्ड रहता है, जिसमें आई एम लाइक कि दोस्तों से प्यार नहीं मिलता या पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता या रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप से प्यार नहीं मिलता. अपने आप को तो हम चलो देखें ना देखें वो बात अलग है, पर बाहर से नहीं मिलता. तो ये बाहर के लोग एक तरीके से जब हम गो थ्रू कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम से, केयर गिवर्स का रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट सिस्टम का रोल प्ले करते हैं. तो उन केयर गिवर्स और उन सपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि हम ऐसी सिचुएशंस कैसे हैंडल करें जिसमें किसी को एंजाइटी हो रही है या किसी को ग्रीव हो रहा है. तो उसके बारे में आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मे बी संजना, यू कैन स्टार्ट. So you basically mean like support for the people who support us, right? Yeah. Okay. And like very good question. I don't think we think about that enough, whether as we are people who require support or we're on the other side, because all of us are both parties in all aspects of life. But I feel like something which is very important is being open and talking and communicating. Without communication, no one will understand how you need to be supported right now. No one will understand if you've reached your bandwidth of supporting somebody else. So having that openness, and that openness comes from love, kindness, care, and like the hope to see somebody doing good. But talking about that is very important, and not to sound like a therapist, but also like psychoeducation
figuring out, reading on your own कि like if somebody is going through a grief or loss or death, what does that mean? What do other people do in such circumstances? And realizing that your presence sometimes is the best thing that you can provide in this situation. Shagun, do you want to go next? We have dogs. I Dogs want to think go the next. dog wants to go next. Dogs, like, we know how to offer support, okay? Like, you Yeah, guys are man. nothing. Bark it out, man. But can I go next? Please go next. Yeah. I understood your question in a way कि जब आप खुद offer कर रहे हो support लोगों को या you're in helping professions, how do you feel helped, or like what like the caregiver or not, whatever, like if you are in healing professions, for a lack of a better word, if you're in health professions, how do you work through your energy, or how do you kind of, I feel like what really helps me particularly, or what has helped me over time, is, again, it's a little isolating. Maybe I'm still figuring that out, but just getting to know myself, which I keep saying all the time, more and more and more. So the more I feel comfortable with my own इमोशंस, जितना मैं खुद को समझ पा रही हूँ, जितना मैं खुद के लिए स्पेस क्रिएट कर पा रही हूँ, उतना मैं लोगों को भी दे पा रही हूँ. लाइक अगेन दैट कोड दैट आई थिंक वी स्पोक अबाउट इन फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, दैट you only meet people as far as you've met as far as they've met themselves. I really believe in it. So I feel like the more you allow yourself to cry, to laugh, to be scared, to be happy, to hurt, whatever, like the more you allow, you're open to experiences around you, the more you open your heart, there's more space for people to be in your heart. So I feel like that really helps. But I'm also now trying to navigate, how do I work my boundaries? How do I contain, if I want to offer help to others, if I'm in this profession where I have to take up space for other people, how do I also recharge myself? How do I also, and I think unmasking helps me do that. People help me do that. So I think वो सबके लिए individual होगा. But yeah, I'm also in the process of figuring that bit out very, very seriously. Like, how do I best train? के आंसर से शगुन के लिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगी इसी में कि संजना ने तो संजना mentioned about openness, सान्या and education, and सान्या ने बात की about कैसे हम अपने आप को जितना अच्छे से जानेंगे, अपनी बाउंड्रीज को उतना बेटर होगा. Sanya ka answer was more from a healer's therapist point of view. Sanjana ka answer was more from a caregiver who can just read up on books to help the person who's suffering point of view. तो इन दोनों answers से another question that stems from my head is कि सिर्फ अगर हम बात करें अपने क्लोज नेट सपोर्ट सिस्टम की, जैसे मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम इज मेरी फैमिली, माय ब्रदर, माय डॉग, माय पेरेंट्स. तो उन लोग को जो ये एजुकेशन संजना बात करी थी, बुक्स पढ़ने से आई डोंट नो इफ इट हेल्प्स, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ में आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, माय डैड डिड रीड बुक्स, बट मुझे नहीं लगता उससे कुछ ज्यादा मेरी हेल्प हो पाई. और किसी और XYZ सिनेरियो में भी, say for example my brother, he has gone through something similar as I have gone through, but फिर भी he was able to hold presence with a lot of strength. but उसके अलावा भी केयर गिविंग मुझे बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता. तो इस स्किल सेट को ऑफ केयर गिविंग इन क्लोज नेट सर्कल्स कोई कैसे बिल्ड कर सकता है, उन लोगों को, केयर गिवर्स को सपोर्ट कैसे मिल सकता है ये स्किल सेट डेवलप करने के लिए? So, firstly, I would like to say, I think despite your tough time, the fact that your dad was willing to put in effort to build a skill set to care for you is insanely amazing. Like, that in itself is marvelous and beautiful. And there are no such, I think very few such structures that exist where people
can learn how to give care unless they are in a caregiving profession. So what that looks like for most Indian families and like people above the age of 30 is कि बेटा तुम बताओ कि हम तुम्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं. लाइक आई हैव सीन दैट इन माय फैमिली आल्सो, बट फॉर समवन टू पुल थ्रू एंड एक्चुअली acquire those skills is second step already. Third, from like your intention has to be there, and that is beautiful. But to give these people the support from personal experience, I have a friend who came out to their family, and their family took it really well. But of course, they come from like a conventional background where no person has openly identified as queer, let alone their own child. And when struggling to find the vocabulary, which books and knowledge can definitely do, it can give you vocabulary, but it can't tell you how to actually navigate through that circumstance when it's in your environment. They joined a group, like a support circle for parents with queer children, so that they could have that relatability, they could navigate through that confusion and chaos and weird feeling together with people in similar experiences. And that adds to why support circles are necessary, because कैसे कर सकते हो आप पढ़ सकते हो, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करके सीख सकते हो. उन लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है पहले से तो उनकी नॉलेज उनके मिस्टेक से भी सीख सकते हो. पर बाकी मुझे लगता है सब कुछ साइको एजुकेशन और इंटेंशन और सपोर्ट से हो जाएगा. उसके अलावा आई मे बी आई एम मिसिंग थिंग्स बट नथिंग सीम्स टू बी कमिंग अप इन माई हेड. You share your experience, you learn, and you have the intention to provide that care for that person. The methods and tools will come to you naturally. You communicate. Beautiful. That's so beautiful. इतना अच्छे से मतलब you explain like everything. तो thank you so much for your answer. So I'll start a cycle now. So सान्या, शगुन, संजना एंड मैं एक जर्नी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सारथी में वी हैव दिस जर्नी कॉल्ड द हीरोज जर्नी, एंड जो हीरोज जर्नी है इज बेसिकली अबाउट पहले तो आइडेंटिफाई करना कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, फिर उसे एक्सप्लोर करना, फिर उसे हील करना, फिर उसके बारे में कोई यूरेका मोमेंट होना, उसको क्लियर करना, एंड देन यू carry all those tools that you had in those experience in that experience, and उसके बाद अपनी लाइफ में उसी को अलग अलग तरीके से यूज करना to help yourself and empower yourself. तो when it comes to the aspect of safety या सपोर्ट, तो मैं सपोर्ट पे फोकस करूंगी बिकॉज उसके थ्रू हमें सेफ महसूस होता है. तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर 1 इज द क्वेश्चन 1 एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ब्रीफली बताना कि हमें सपोर्ट की जरूरत है. लेट्स स्टार्ट विद सान्या. I feel like किसी support की ज़रूरत नहीं है. Like comes down to that for me that we all need support. I personally as a practitioner also or as an individual apart from my therapist self feel like everybody needs support, if that makes sense. Like तो कैसे आइडेंटिफाई करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो चाहिए पता है बस. हाँ. शगुन, I hope it doesn't ruin your cycle though. No, I had the same answer because I feel like everybody needs support genuinely to exist, even if you're not going through massive turmoil. Even when you're just sitting, you're peaceful. I too personally start feeling like isolation. I mean, I need my people around me. Otherwise, it's just slippery slope downhill, Even if nothing significant is happening, I need people. And my people are my support. But let's look at your question again. Ki how do you identify that you need support? Basic self-awareness. अलावा दिनमा says कि ब्रीफ में बताना और हम पूरा डिस्कशन शुरू कर देते हैं उसके अराउंड. बट
trying to answer the question in a way that you asked it is like I agree with what Shagun and Sanya said, but also how this would be very different for every individual. So, sort of reflecting back on how you felt when times haven't been good for you and you've struggled is very important. So, for me personally, I know when my chest is feeling too heavy or when I don't want to eat, that's when I know ki, oh, I'm feeling worse than I usually do. I should ask for support if I have not already. So even in psych, we'll say there are like some basic markers which you follow करते हो नहीं करते वो different है but हमको सिखाते हैं. When do you think you should consult a professional? Is you're eating too less, too little. You're sleeping too less, too little. Doing basic things of self-care feels like a struggle. You're not finding joy in the things that you used to find joy in. You're isolating yourself. So while these are some basic markers, reflecting on how it feels for you is very important because this will look very different for a lot of people. Maybe you're drinking more right now, and that's a sign that you need to ask for support. So it could be very different. So exactly. So it's like symptoms. सिम्टम्स सबके अलग अलग होंगे. as संजना राइटली सेड, सिम्टम्स सबके अलग अलग होंगे, बहुत सब्जेक्टिव होंगे, बट मोटे मोटे सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है एक्सटर्नल. I feel like your body will tell you. I feel like that also comes back to the connection you kind of, how in tuned you are with your own needs as an individual, how much you're able to connect with your body, connect with your mind, that okay, maybe I need a little bit of a hand here. And I also feel like when I don't have support is when I need support. So my mind is going in that direction all the time. कि जब नहीं है तब चाहिए. But yeah, I feel like physiologically, your with physical health तो बहुत evident हो जाता है. Even though it's all intertwined, but with physical health, you know that you need support. You need someone to take care of you if you're going through something. You're struggling with loss of health. मेंटल हेल्थ में वो समझना ही और उसके कंडीशनिंग को तोड़ना और उसको वो ही इतना बड़ा बैटल होता है. दैट्स व्हाई आई थिंक नॉर्मलाइजिंग द आइडिया ऑफ सपोर्ट, टफ लव वगैरह नहीं समझ आता मेरे को. सो लाइक नॉर्मलाइजिंग सॉफ्ट लव एंड सपोर्ट आई थिंक इज अ बिगर क्वेश्चन. I personally feel like I need people as a sounding board for my thoughts very often because having that volley of conversation internally mostly is brilliant, but sometimes it overworks itself and I'm unable to be like, okay, this is an answer because one-sided होने लगता है बहुत ज़्यादा. So those are immediate signs for me कि I really need to take out this ball of whatever is happening and with someone I care and trust so that they can be a mirror to my internal self. And that is my first marker ki okay, now I need people. I need my friends here. Even if it's one long conversation of absolutely nothing, that little thing needs to come out and then I'm fine. Like I'm not saying ki vent karna necessarily, but even having like dialogue with my support circle, my friends are my support circle, that in itself creates like this ease for me. So that is how I feel supported, and when that's not there, it becomes easier for me to feel imbalanced. So when I'm sensing that imbalance, I know I need support. Now the next question is कि how do you ask for it? Like before even exploring कि मेरे लिए क्या काम करेगा, किस टाइप का सपोर्ट मुझे चाहिए, दोस्तों का चाहिए, फैमिली का चाहिए, थेरेपी का चाहिए, मैं मांगू कैसे? बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है. और जो लोग बार बार मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं, उनको गिल्टी भी फील होता है कि मैं शायद वीक ना अपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो लाइक how do you ask for it even before exploring the various ways?
Yeah, I think that's what I meant when I said, okay, Shagun, you नहीं want to नहीं, go first? तुम बोलो पहले No, I don't have an answer to this. Like, how do you ask? Not to just outrightly answer that, but this conditioning where there is a very very important grave need for us to normalize the idea of support, so that it doesn't feel, it's like, I don't know if you guys have read that book जिसमें वो बोलते हैं कि what is the bravest thing I've ever done, and the horse says, or the fox, I don't know, says that I asked for help, I reached out. So that normalization in itself is so important, that the idea of support does not make you weak. अगर सब नॉर्मलाइज होगा, अगर सब एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो वियर्डनेस आएगी ही नहीं कि मैं सपोर्ट कैसे मांगू, मैं ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मांग रही. तो आई फील लाइक अ बिगर टैपिंग ऑन इज क्रिएटिंग एक्टिव स्पेसेस, सपोर्टिंग योर सेल्फ, सपोर्टिंग अदर्स, नॉर्मलाइजिंग इट टू द एक्सटेंट वेयर इट्स नॉट सीन as a weakness, rather it's seen as a strength. That's, I think, how do you do this? I don't know. We are trying to do it for ourselves, for people around us, but yeah. Shak, क्या बोल I रही हो तुम? think based on my own living of life, I have personally tried to be very बेझिझक एंड unapologetic about it कि भाई मेरे को चाहिए, मैं कॉल कर रही हूँ. बट दैट कम्स विद दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वेर आई टेक इन टू अकाउंट द कैपेसिटी ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो. लाइक आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि उस इंसान की तभी काबिलियत है टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर मी, या वो खुद रन ऑन फ्यूम्स कर रहा है. सो यू चेक इन लाइक व्हेन आंसरिंग योर क्वेश्चन, व्हेन पीपल फील लाइक मैं ज्यादा सपोर्ट मांग रही हूँ या मैं ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो रही हूँ. पर्सनली व्हेन माय पीपल आर गोइंग थ्रू समथिंग, तुम आ जाओ, तुम रैंट करो, मैं सुन रही हूँ. पर मैं ये भी बता देती हूँ कि मेरे साथ ये चल रहा है, तो आई विल ओनली बी एबल टू सपोर्ट यू इन दिस कैपेसिटी. आई कैन हियर यू आउट, but I won't be able to sit for 4 hours and also give you advice on this. Sometimes I have so full कि भाई तुम मुझसे हफ्ते भर रोज बात कर लो. I'm here for your depends on how open you are in communicating with the person you are seeking support from and with. I think normalizing is really, really important, but also checking in to people's personal capacities that can prevent that, burden कि okay, बहुत ज्यादा मांग लिया मैंने, जब वो बात कम्युनिकेट हो रही है. वेरी वेरी इंसाइटफुल कि सामने वाले से जो सपोर्ट जिससे आप मांग रहे हो उससे भी चेक इन करना कि क्या आप ऑफर कर सकते हो, मुझे चाहिए इस समय. संजना? I feel like you both have already covered so much of what I wanted to say. But I feel like I just have more questions about this sentence only. अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या होता है? क्या ये आपको लग रहा है, क्या ये सामने वाले ने बोला है आपको कभी, या सिर्फ आपको लग रहा है? What is your relationship with help? Why does help make you feel uncomfortable? What are your expectations from your loved ones? Is this something you would do for them? Then why does it feel so uncomfortable to have others do this for you? And yeah, sorry, but important questions. And what does help even look like for you? And I feel like to then be more like practical about it, whatever that means, the first thing that came to my head is to start small and start with the people who you feel the most comfortable with. And even be open about this, like, hi, I'm going to try asking for help. It's difficult, but I'm going to try. I hope that's okay. I know it's difficult to say these things to another person, but एक बार करके ही होगा. So start small, like smallest of help if that makes you feel uncomfortable, and then see how the other person reacts. Because hopefully more often than not, they're more than willing to help. ये मैंने ना संजना का नोटिस किया है पहले सपोर्ट ग्रुप में भी. ये एकदम ना बुलजाई हिट करती है, एकदम ऐसे दिल की तार एकदम स्ट्रक होती है विद सर्टेन थिंग्स दैट शी सेज. क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर डिपेंडिंग वाले साइड पे इसीलिए पूछा था क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत बारी जो लोग होते हैं वो
प्यार देने में झिझकते नहीं है, लेकिन मांग रिसीव करने में, देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब देते हैं बहुत ज्यादा, बट हम लोग को रिसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है किसी से, और मांगने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा देते हैं. तो हाँ, दैट्स वेयर दिस क्वेश्चन वाज कमिंग फ्रॉम. सो गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगेन इसको, ये बहुत ब्रॉड है तो इसको जितना ब्रीफ रखेंगे, सो मे बी यू कैन टेल मी वन टूल, एक तरीका जिससे हम ये वाला, इसका जो रूट कॉज है, जो एक्चुअली सबके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे अनसेफ फील हो रहा है इसलिए मुझे सपोर्ट चाहिए. तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे डर लग रहा है, किसी भी चीज से डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, इस पर्टिकुलर स्पेस में मुझे क्या हेल्प करेगा उस चीज को हील करने के लिए? मे बी यू कैन से वन थिंग कि मैंने अब मांग ली हेल्प, मैंने एक्सप्लोर कर लिया, कौन सा टूल सही टूल होगा अपने आप को हील करने के लिए उस स्पेस में. मे बी यू योरसेल्फ कैन टेक वन एग्जाम्पल, वन सिचुएशन, जरूरी नहीं है ये फियर वाला लेना है. यू योरसेल्फ कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी और ओन एग्जाम्पल, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वाला टूल मेरे हिसाब से वुड बी ग्रेट, just to show the diversity. Can I go first? This is a very intensely broad question, and I'm not big on tools, but to still answer it, I feel like one of the first things is to be open and kind to yourself. After that, you'll be able to follow through whatever other tools or come to terms with the fact that you asked for help. But giving yourself that time, space, and allowing yourself to be kind and understanding yourself, I feel like is a very important thing, especially if after a lot of thinking and struggling, you've asked for help, because I'm sure that will also bring up a lot of things in itself. Or if it's the first time you accepted ki, oh, okay, I feel like blank, so I've asked for help. So that kindness. So it can be something like loving yourself in maybe 2 words, that can be very healing no matter what situation you're in. किसी भी सिचुएशन में आप हो, अपने आप को प्यार देना in itself बहुत ज्यादा healing होता है. Yeah, trying to just be with yourself with kindness. Shagun, sorry, bolo. I'm saying self-love is a great way, but it's really hard to do in that moment. Like when that emotion is overpowering you, मैं कहाँ से लेके आऊँ यार, प्यार नहीं हो रहा है खुद से. That can happen. So building on to what Sanjana said, only like tools in general, I'm sure they help some people, but I also personally don't feel like कि ये problem है तो ये करो, ये problem है तो ये करो. That necessarily works. Because it's everyone's got different context and different variables and different circumstances. But the first tool, I think, to take the pressure off your heart and mind is genuinely accepting you are feeling this way. The second you do that, I have seen I can step away from that feeling just a bit. कि ठीक है, थोड़ा distance हो गया है मुझ में और उस feeling में. That's all. And then you can do whatever you want to do after that. Like it kind of unparalyzes you in a way. It's like validating खुद के emotions. या accepting them कि ये जैसे भी है मेरे है. In itself वो self love का, like a little as you said, baby है, first step है. हाँ. Correct. Tanya? Yeah, I think adding on to what Shagun also said, this part which I also do very, like I try to practice very often, is I do this a lot. Like this is just like an act of surrendering. And there is so much ease and so much joy in just, I don't know, like surrendering and knowing that a lot of it is mostly nothing. Is like I take a little other tangent ki kuch hai hi nahi haath mein, and like kind of easing out, surrendering, and also letting it pass through you. Like one tool that makes me that helps me is just
at the end of the day, we fear a feeling. Matlab, in the context that we're talking about, whether we're not loved by people who are supposed to love us, बहुत सारी चीजें हैं. I feel like letting it pass through you so that you can learn, your brain can learn that you got this. There is ample amount of space in your heart and in your heads for all of these emotions, whether they are love or pain or jo, these are the just terms we use. But I feel like surrendering and also letting things pass through you will make it feel less threatening as opposed to jumping onto a tool. I feel like hold it lightly is something I say very often. So holding it lightly, taking life not too seriously, taking yourselves not too seriously, and just doing this very often. That helps me. मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट था वाज ऑफ क्लियरेंस एंड हैविंग लाइक अ यूरेका. तो मुझे यूरेका हो गया है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ. एंड आई थिंक दैट वील कवर दैट थिंग अप बाय दिस ओनली कि एज संजना सेड काइंडनेस, एज शगुन सेड एक्सेप्टेंस, एंड सानिया ने बोला सरेंडर. सो आई थिंक ये तीनों ही टिंग 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 लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल कि ये जो सेल्फ लव है ये एक्चुअली 3 हिस्सों में बट के इतना सिंप्लीफाई हो गया है. एक्सेप्टेंस, काइंडनेस एंड सरेंडर, जस्ट 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 वर्ड्स. एंड उसी को बस इन वर्ड्स को सुन के अपने आप को ये 3 वर्ड्स बता के, मेरे लिए दैट इन इट सेल्फ इन दिस मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में इतना क्लियर, इतना प्योरिटी है इसमें, इतना क्लियरेंस हो रहा है मेरे लिए ही कि हाँ यार मैं कितनी प्यारी हूँ यार. Oh my God. I love myself so much. तो that in itself is a breakthrough, and I think जो आगे की जो जर्नी है फुल प्रूफिंग करने की कि मैं कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, आई थिंक यही स्टेप्स 3 में रिपीट कर सकती हूँ. और जब मुझे कहीं फिर इनकम्प्लीट लग रहा है देन आई कैन फिगर आउट सम मोर टाइनी लिटिल वेज जो मेरे लिए हीलिंग हो गए सब्जेक्टिवली. विद सपोर्ट आई कैन फिगर, विद थेरेपी आई कैन फिगर, मैं जान सकती हूँ as long as I know that I'm open now because मुझे वो ब्रेक थ्रू हुआ है. That in itself is an experience. मुझे ये फील कराने के लिए कि हाँ मुझे ये more often करना चाहिए. And यही जर्नी है I guess. So yeah, with that I think I would love to wrap this entire podcast up, which was very, very insightful. Thank you so much for all 3 of you being there. One last word that all 3 of you would want to give for encouraging and empowering people to come into community spaces more, to take up more, to be open to support groups more. What would you like to say? Maybe in one line, Sanjana? प्रेशर हो रहा है मुझे कुछ अच्छा बोलने का. But this is something Sanna usually says. Why would you not want to give yourself a chance and a space? Just give it a go, because at the end of the day, no one else cares what you're doing. You're only doing everything for you. Beautiful. ये सानिया ना मुझे बड़ी फिल्मी लग रही है, जैसे जैसे मैं जानती जा रही हूँ इसे. Yeah, I don't know. I think for me it's वो फिल्मी जो बोल दिया है तो मैं चेंज कर देती हूँ अपनी लाइन. किडिंग. बट अलाउ no, but this part, just like allow yourself to be understood. Like all of us crave understanding, all of us crave love, support, but put an effort. That is something I would want to say, that allow yourself to be understood and do something unfamiliar, experience unfamiliar things, because that might also bring a lot of emotions that you may be craving. So aa jao bas. That is what I would say. Shagun? This might sound bad, not bad, but बहुत self promotion ही. But the reason that I wanted the podcast to be, it's called Sherdili, because I also feel like this is a way I want to live my life. Like it's not a word, but with
you need massive courage to put yourself in these situations. So that effort can only come with massive courage. बस दिल को हाथ में पकड़ो और लेके कर लो, और जब हो जाएगा तब लगेगा कि शिट, इससे क्यों डर लग रहा था, क्योंकि हो जाता है यार, लड़ते घिरते घिसते. I think put yourself out of your comfort zone, and that's all you need to do. That's all. Experience the unfamiliar. Wow. Wow. Don't be afraid of the unknown, but just get to know it so that it feels more familiar and you feel safer. मेरे शेर दिल्ली से एक बात दिमाग में आई जो मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी, और मैं इनकी भी प्रमोशन करना चाहूंगी. वाई नॉट, क्योंकि वाई नॉट कि मेरे गुरु ने मुझे एक बार बात बोली थी ये, कि जब जंगल में तुम्हारे साथ एक शेर चल रहा है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जंगल का किंग तुम्हारे साथ खड़ा है. तो फॉर मी, इमेजिन इफ आई माई सेल्फ बिकम दैट जंगल का किंग, मैं खुद वो अपने दिल में लायन बन जाऊं, एंड मे बी फॉर दैट आई नीड अ लायन टू वॉक बिसाइड माई साइड, और मे बी मैं खुद ही फील करने लगूं वो, Maybe क्योंकि I मुझे am the जंगल के बारे में lion. पता चल गया है थोड़ा बहुत. My heart is the हाँ, lion. क्या मैं ही हूँ पता, उसको lion. डरा के रख रखा है जीवन भर से, क्या पता. Lion heart. Actually. शेरनी है. I like the शेरनी वाला part of it. Like, let's go. Lioness do the Yeah. most work, by the way. Yeah. Yeah. Amazing. Thank you to all three of you. Thank you for your time. Thank you इतने Thank insights you देने for के लिए. having us. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank This I was feel very like fun. I'm so glad. मतलब बढ़िया हो. Like, I feel like you're doing something good. This was actually a lot of fun. Yeah. मजा आया. Okay. Nice. Bye. I'm gonna stop Thank recording. you. Bye. Bye.